Good evening, dear student. As we have cleared the first part of the lesson of Midnight Visitor, and I have given you a lot of information about the chapter, about the character, and about the incident which has happened in this story. So let's discuss the second part of this story. In the first paragraph, narrator gives the physical description and gesture and posture about the Max, who is another character in this story, and he is a secret agent also. So, student, let's start. Max was slender, a little less than the tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. That means Max was not so healthy. He was a slender. This means thin, a little less than tall, and he was not so tall as Fowler thing, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of facts, and he was a crafty. The crafty means a person who used to cheat with someone. Countenance of a fox. That means his face was just like a fox. Means here author want to express that कि उसका चेहरा फॉक्स की तरह कनिंग था. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. There was nothing, और उसके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि बहुत ज़्यादा वो फियरसम हो. हाँ, उसकी असाइड एक गन थी, मतलब उसके पास एक गन थी. इसके अलावा नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, इसके अलावा उसके पास और कोई भी डेंजरस इंडिकेशंस नहीं थे. दैट मीन्स he hadn't a good personality, he hadn't a very muscular frame, neither he had the extra other weapons in spite of a small gun. So next, the report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missile. Then Max asked to the Oswald that where the report. वो उससे पूछता है कि द रिपोर्ट, वही रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली थी, और वो रिपोर्ट किसी मिसाइल्स के विषय में है. आई थॉट इट वुड टेक इट फ्रॉम यू. तो मैक्स कहता है कि मैंने सोचा कि मैं इससे तुम्हें ले लूँ, मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ले लूँ. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. एंड फर्दर ही सेज दैट इट विल बी सेफर in my hand than yours. That means here he want to show that he is a superior. He is a more careful and superior than the Oswald. Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. Then Oswald moves toward an armchair and sat with calm, with easygoing way. And he further said that what the devilish things, what the nuisance create in his room, it is not tolerable for him. So he is going to complain with hotel management. And further he said to the Max that you can bet on it. मीन्स वो कहता है कि मैं अब जो मेरा एक पर्सनल रूम है, इस रूम में बहुत सारा नॉइसेंस हो गया, तुम बिना बताए मुझे आ गए, तुम कैसे आ गए मेरे कमरे में बिना मेरे परमिशन के, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल डेविलिश थिंग्स है. और इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ, और मैं होटल मैनेजमेंट से शिकायत करूँगा कि आपने मेरी प्राइवेसी का आपने ध्यान नहीं रखा, और मेरे कमरे में बार बार अपरिचित आ जाते हैं. देन ही सैड ग्रीमली, दैट मीन्स he said these things in very serious mood. This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. Further he says that okay, it is the second time in a month that a stranger came into my room through the balcony. बालकनी से कोई स्ट्रेंजर मेरे कमरे में घुस आया, ये इस महीने में 2 बार हो चुका है. एंड दैट इज़ इनफ. डेफिनेटली आई एम going to complain with this
incident about with the hotel management. Fowler's eyes went to the single window of the room. Then Fowler, जो कि वहीं खड़ा था, वो उस खिड़की की ओर देखता है. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly, and it was a single window, an ordinary window, and outside of the window there was nothing but blackish. That means काला, एक काली रात के अलावा उसकी खिड़की के बाहर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. Balcony, Max said, with a rising inflection. That means he showed the counter stroke of his words and so that balcony. No, पास की. कहता है मैक्स कि बालकनी नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया, मैं पास की, मतलब मैं पास की से आया हूँ. पास की मीन्स मास्टर की. कहता है कि मैं मास्टर की से तुम्हारे कमरे में एंटर हुआ हूँ, न कि मैं बालकनी से उस खिड़की के थ्रू आया हूँ. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. मुझे तो बालकनी के विषय में पता भी नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. फर्दर वो कहता है कि अगर मुझे पता होता तो शायद मैं बहुत परेशानियों से बच गया होता. मुझे पता होता कि इस बालकनी से, ऐसी खिड़की से भी अंदर आया जा सकता है, तो शायद मैं फर्दर परेशानियों, बहुत सारी परेशानियों से बच गया होता. It is not my balcony, Oswald said with extreme irritation. Then Oswald saw the irritation and said that it's not my window and not my balcony. It's belonging to the next apartment. This balcony belongs to the next apartment that is joined with my apartment. He glanced explanatorily at Fowler. Then he looked toward the Fowler. You see, he said, and then demanded the answer that you see, he said. This room used to be a part of a large unit. Further, he explained that this room used to be a very large part of a unit, and that next room, through the door there, used to be living room, and the next room through that door used to be the living room. That means the next door used to be a living room. He was also a living. He that means in which room he used to live. This is a living room, and the next apartment is also a living room, and both the living rooms are joined with the balcony. He explained like this. It had the balcony which extend under my window now, and this is the balcony which is expanded under my window now. You can get into from the empty room 2 doors down. And further he point toward the Max that you can pass out. You can enter into another room by this window, by this balcony. And somebody did last month, and somebody did like this in last month. The management promised to block it off, but they haven't. And management promised to me that he will log that window as soon as possible, but they didn't even yet. That means here ऑस्बल मैक्स से कहता है कि इस विंडो के बाहर एक बालकनी है. ये बालकनी एक्चुअली में मेरा बालकनी नहीं है, बल्कि ये बगल वाले अपार्टमेंट की बालकनी है, और उस बालकनी से मेरा ये विंडो अटैच्ड है. और पिछली बार भी इस बालकनी से कोई स्ट्रेंजर मेरे कमरे में घुस आया था, तब मैंने होटल मैनेजमेंट से इस बात की कंप्लेन की थी. होटल मैनेजमेंट ने कहा था कि होटल मैनेजर ने कहा था कि वो इसे बंद करवा देगा. उसने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन उसने ऐसा अभी बंद नहीं करवाया. सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये 2 या 3 पैराग्राफ आपको समझ में आए होंगे. नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.